Hello everyone. Very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SAMCO Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है और जिन्होंने अब तक ज्वाइन किया हुआ है, आप मुझे चैट बॉक्स पर हाय हेलो बोल के कमेंट कर सकते हो. So I'm just waiting for people to join in. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे चैट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मुझे पता चले कि आप इस लाइव सेशन पर हो. ग्रेट. सुरेश जी इज़ योर. मुकेश कुमार जी भी है यहाँ पे. हाय गाइस, गुड इवनिंग. व्हाट अबाउट अदर्स? मुकेश जी सेइंग यस. चैट शो हो रहा है. ओके, ग्रेट. आई होप आवाज़ भी सुनाई दे रही है. सुरेश जी भी है यहाँ पे. व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, फॉर द वंस हु हैव जस्ट जॉइंड इन? आप मुझे बस एक चैट बॉक्स पर बता सकते हो. हम बस एक दो मिनट रुकते हैं और फिर आज का जो हमारा प्री बजट यूट्यूब लाइव सीरीज जो है, जहाँ पे हम रेलवे सेक्टर को कवर करने वाले हैं आज, उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे आज. ग्रेट. संजीव शर्मा जी इज हियर. वी हैव रोहित महाजन जी also. Great. Yes, audible. Voice is all clear. Perfect. Krishna ji is also saying yes. नीरव भाई भी है यहाँ पे. Venkat Ramanan ji is also your. Good evening. Chalo. Great. So I think we can start off with our analysis, right? If you can just give me a final heads up in the chat box. तो हम आज की सेशन शुरू करते हैं. सो आई जस्ट टेल यू हम आज क्या करने वाले. तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है प्री बजट सीरीज का. तो जैसे कि आप जानते हो, हम जो तीन इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जो बजट में शायद काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इसके इनके रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स है. तो एक है आपका रेलवे सेक्टर, और एक है आपका फार्मा सेक्टर, और एक है आपका टूरिज्म सेक्टर. तो ये तीन सेक्टर्स हम कवर करने वाले हैं अगले तीन ट्रेडिंग सेशंस में. मतलब आज रेलवे का सेशन होगा, कल आपका फार्मा का होगा एंड मंडे को आपका टूरिज्म सेक्टर होगा. तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे सेक्टर में क्या अनाउंसमेंट्स है, क्या काफ़ी चर्चे में है. हाल ही में एक दो हफ्ते में हमें क्या सुनने को मिला है रेलवे सेक्टर में. आई थिंक रेलवे इज़ एवरीवन्स फेवरेट नाउ, एंड आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियो में भी एक आध दो रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स तो होंगे ही. तो पहले हम लोग तो देखेंगे कि क्या अनाउंसमेंट्स है रेलवे रिलेटेड. देन हम लोग थोड़ा डीप डाइव करेंगे इसके रेशियो एनालिसिस पर, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है. बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले इट्स इम्पोर्टेंट दैट हम जाने कि वो कंपनी कैसी है. फाइनेंशियल वाइज एंड ऑल्सो वैल्यूएशन वाइज भी हमें देखना होगा कि कौन सी कंपनीज एक बेटर वैल्यूएशन में अब ट्रेड कर रही है. एंड टुवर्ड्स द एंड हम थोड़े चार्ट्स भी देखेंगे जो स्टॉक्स के हम एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको एक बेटर आइडिया आ जाएगा. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द राइट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बट एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, कोई भी स्टॉक हो या कोई भी सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स हो, these are some basic checks that you can do before you get started with your investing journey. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. तो ये है आपका जो रेलवे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स क्या है, पहले वो हम देख लेते हैं. सो व्हाट्स इन दैट स्टोर फॉर द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर. जो फर्स्ट पॉइंट है, जो हमारा इंटरिम बजट हुआ था फरवरी में,
तो यहाँ पे आपको मालूम ही होगा जब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ऑलमोस्ट 2.52 लाख करोड़ का एक ग्रॉस बजटरी सपोर्ट दिया था, which itself is a huge amount, and with additional 10,000 crores भी commit किया था from extra budgetary resources here. And there are talks that शायद ये जो allocation है, ये जो capex का allocation है, और ऐसा टॉक्स है कि ये जो कैपेक्स का अलोकेशन है वो शायद आने वाले बजट में शायद बढ़ भी सकता है. So, this is a huge amount, 2.52 lakh crores. Secondly, there are also calls for the government कि ये जो प्रायोरिटाइज करना, ये जो इंटरिम बजट में जो अनाउंस हुआ था आपका एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स का, तो उनका ये जो क्रिएशन है, ये जो तीन मेन कॉरिडोर्स है, इनको थोड़ा प्रायोरिटी देने के लिए काफी कॉल्स आए गवर्नमेंट को. तो वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट रिलेटेड टू दिस इन द अपकमिंग बजट एज वेल. बिकॉज ये जो एनर्जी मिनरल और ये जो सीमेंट कॉरिडोर्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस विल प्रॉब्ली एनहांस योर कनेक्टिविटी और ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी ड्राइव कर सकता है. So this is one important announcement that you need to look at for railways. और जो थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी आप देख रहे हो डिफेंस में भी काफी वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट आत्मनिर्भरता इन द गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू प्रमोट अ लॉट ऑफ इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हियर. तो participants are also asking for the PLI scheme. Now PLI is nothing but your production linked incentive, ताकि ये जो रेलवे एंसिलरी पार्ट्स है उसका लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट दे, ताकि हम अपना इंपोर्ट से जो कर रहे हैं उसमें अपना जो रिलायंस है, द वी रिलाय अ लॉट ऑफ ऑन imports for the railway ancillary parts now. So there are also calls to boost production of railway ancillary parts in India, ताकि आप लोकल प्रोडक्शन को ज़्यादा महत्व दे, ताकि हमारा जो इंपोर्ट्स में जो रिलायंस है वो काफ़ी कम हो. एंड दिस वाज प्रोबेबली 2 वीक्स बैक. आपने जो एक हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 2500 न्यू पैसेंजर ट्रेन कोचेस नाउ, विच इटसेल्फ इज अ बिग थिंग. और एक 10,000 एडिशनल कोचेस के भी उनको अप्रूवल मिल चुके हैं. एंड हमने देखा कि वंदे भारत ट्रेन्स के सक्सेस के बाद दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर 50 न्यू अमृत भारत ट्रेन्स. So obviously, railway is one sector that has performed a lot in the last 5 years, and chances are that we might see more improvements in this sector going forward. And lastly, not the least, infrastructure का जो सबसे key component है, that is your cement. And अभी के लिए जो cement में जो GST लगता है, that is nearly about 28%. तो एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और बूस्टअप देने के लिए थोड़ा गवर्नमेंट रिकंसिडर करे, ये जो 28% जीएसटी है सीमेंट पर, उसको थोड़ा कम किया जाए, ताकि आपका जो कॉस्ट है वो घटे और थोड़ा आपका प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस हो. So these are the five key points, and railway is one sector that you should definitely be looking at. But before we start off with the analysis, I would want to know how many of you guys have railway related stocks in your portfolio. You can just give me a heads up in the chat box. यहाँ पे कितने लोग के पास है, और जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है आप मुझे बता सकते हो कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो. बिकॉज आज जो हम एनालिसिस करने वाले, आई हैव पिक्ड the top two stocks here, which is based on railway infra. Obviously, we also have IREDA, IRFC, then we have the companies that makes wagons, जैसे Jupiter wagons है, Titagar wagons है. But I'm focusing mainly on the top two companies that is focused on railway infra. The one is your RVNL. We all know how RVNL has performed. Probably in the last 2-3 years, it is trading at absolute crazy valuations right now. So हम लोग देखेंगे कि इसका valuations क्या है. RVNL है, and there is one other competitor for RVNL, which is Ircon International. So these are the two stocks that we are going to analyze. These stocks will definitely have some impact on the budget announcement day, and also on days post the budget, because I'm pretty sure there's going to be an increase in capex amount announcement for budget
and हो सकता है that one of these stocks probably might do well or he might both the stocks might do well here. बट ऐसा नहीं कि हमें अभी इस रेलवे का अनाउंसमेंट आ गया तो हम ये दोनों स्टॉक में पैसा डालें. इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि ये व्हाट इज फंडामेंटली वेदर दी स्टॉक्स आर गुड, क्या अभी ये स्टॉक्स लेने के लायक है कि नहीं. सो दीज आर द थिंग्स दैट वन शुड कंसिडर. तो बिफोर आई स्टार्ट विथ माय एनालिसिस, there's a poll that is open here. If you are holding any railway stocks in your portfolio, so I'll just close the poll now. Okay, Rushabh ji is saying okay, you don't have it. Mukesh ji is saying RVNL का 100 quantity है. Okay, Mukesh Kumar ji also has IRFC का 200 quantities. Mumtaz ji doesn't have. Great. So I can see that 56% of you guys have railway stocks in your portfolio. 22% are saying no. And I can see that another 22% they are monitoring railway stocks. Good. So if you already have, it's good. If you are considering to invest in railway stocks, probably now we might see कि इसका financial health क्या है. Any other railway stock that you guys hold apart from RVNL and IRFC? I think Rushabh ji has said he has sold it. Mukesh ji saying RVNL, IRFC. Anyone who has any other railway stocks? Or how many of you are holding IRCON here? I want to be very specific here. Either RVNL or IRCON. Any one of the two stocks are you guys holding? You can let me know in the chat box. Once you let me know in the chat box, and then probably we'll see कि दोनों health wise and fundamentally which stocks are doing well. Anju ji is saying you have Terran and Titagar. Okay, IRFC, I have 400. Good. Meet ji is saying RVNL. Okay, I've seen a lot of buyers for RVNL, but I don't see anyone for IRCON here. I think by the time we complete with our analysis, I mean, no doubt, RVNL is also fundamentally sound. Even IRDA, for example. But I'm little surprised with the fact that nobody is saying that they have IRCON in their portfolio. It's not a recommendation, but once we do with our analysis, you will probably ऐसा हो सकता है कि chances are that IRCON might be slightly undervalued as compared to RVNL now. RVNL का हम लोग valuations देखेंगे when we look at the P ratio, price to book, and also the price equity to growth, which is your PEG. उसमें दोनों में हम लोग देखेंगे तो हो सकता है valuation wise RVNL is quite overvalued at this point. Okay, I see IRFC. It's mainly into finance, but rail infra में RVNL, IREDA. Okay, now nobody is owning IRCON. Okay, fine. So we'll see. चलो हम लोग पहले analysis करते हैं. Let us look at these stocks fundamentally. So if you look at RVNL, जो सबसे पहला चीज है the market cap. अगर RVNL की market cap देखे, it's 1,22,000. And अगर इरकॉन की मार्केट कैप देखे, pretty small company compared to RVNL, it's only 30 almost 29,000 market cap. So RVNL market cap के हिसाब से अगर देखेंगे, it's almost 4x bigger than IRCON. So compared a bigger company compared to IRCON here. So market cap wise, yes, RVNL is a bigger company than IRCON. Now if we look at the return on equity, कि equity shareholders के जो पैसे से जो return बनाया है कंपनी ने, so what I've taken is I've taken last 5 years data. So I have sourced this data. मनी कंट्रोल से मैंने लिया हुआ है, और अब जो screener.in है जो काफ़ी अच्छा वेबसाइट है डेटा के लिए, तो मैंने एटलीस्ट लास्ट 5 years का डेटा लिया, बिकॉज इट वोंट बी फेयर टू कंपेयर लास्ट 2 years डेटा. थोड़ा एक लंबे समय का डेटा देके विल जस्ट ट्राई टू मेक अ सेंस ऑफ ये कंपनीज ने पास्ट में कैसे परफॉर्म किया है, and hope that the company keeps on performing the same way in the future as well. ऐसा नहीं कि पास्ट में अच्छा किया है तो फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे ही, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा. But we'll come to know about financially fundamentally how these companies are doing here. So if I'm looking at ROE, if you look at RVNL का ROE trend for the last 5 years, almost ये 14% था, वो बढ़कर हो गया यहाँ पे 18%. Oh, I can see share investing. I think one person has commented is holding IRCON. Okay, great.
RVNL का जो ROE है that has gone from 14% to 18%, which is good. Ircon का ROE is also grown. It was 11% in March 2020 and it has gone to 15%. So year on year अगर आप देखोगे, there was a slight dip for Ircon in March 21 compared to RVNL. But overall, the trend for both the companies based on ROE wise is positive. I think the ROE has been growing since last 5 years. So nothing that could separate the companies at this point of time. Now if we look at the ROC percentage, अगर आप ROC देखोगे again, return on capital employed, जो total capital है वो employ करके the returns that these companies have generated. RVNL's ROC has gone from 10% to 16%. Again, you could see similar growth compared to your ROE. And Ircon's ROE has gone from almost 10% to 13% now. So ROE, ROC growth अगर आप देखोगे Ircon का, that is slightly at a slower rate, as compared to RVNL. If you guys can confirm if my screen is visible, are you all able to look at the numbers properly? अगर आप मुझे बस एक confirmation दे सकते हो, that would be great. So I'll just थोड़ा मैंने zoom in कर लिया है. So ROC wise, again, RVNL is probably moving at a faster rate as compared to Ircon. Now, if we look at the top line, which is the revenue growth for RVNL, RVNL का जो revenue growth था in March 2020, it was near about 14,000 crores. And it has gone to almost 21,000, 22,000 crores now. So good revenue growth as well. And if you see year on year, 14,000, say 15,000, 19,000, 20,000, and 22,000. You can see every year the revenues are rising. But if you look at Ircon's revenue growth, it has been at a much faster rate because obviously यहाँ पे lower base भी है. RVNL has a higher base here, but almost from 5,400 crores, Ircon has gone to 12,000 crores. So that's almost more than 100%, which is also good. But Ircon का जो base है वो काफी कम है. It started with 5,000. But it's like more than 100% revenue growth in last 5 years. I mean, no wonder you've been seeing why railway stocks, have been rising. Again, now if we look at the profit growth is very similar. So profit growth for RVNL again was near about 770 crores. Again, steady rise over the next 5 years from 700 crores to 900,000, 1261, and almost 1500. So you can see the profit has doubled here for RVNL and very similar figures for Ircon as well. From almost 454 crores, it has gone to 883 crores. यहाँ पे भी अगर देखोगे last 5 years, both the revenue and profits have doubled. तो हो सकता है कि आने वाले 5 साल में भी शायद ये figures double हो. Probably 2029, maybe this 800 crores might be somewhere around 1700, 1800 crores of profit if the companies manage to stay consistent with this run rate. So again, good numbers by both the companies here. The most important, I think, data which a lot of investors ignore is the cash flow. अगर आप कैश फ्लो वाइज देखोगे, RVNL had a negative. I'm talking about operating cash flows here. RVNL had a negative operating cash flows of 964 crores, but then it recovered, and now, as per March 24, it has nearly about 2,900 crores of cash flow. So operating cash flow is positive. That is one data point that I always monitor. कि I look for those companies that has positive, operating cash flows, and the trend is somewhat steady. Ircon का आप देखोगे, they are at a negative operating cash flow, but the amount is not very significant, compared to the revenue and the profits that Ircon has. But nearly about 78 crores of negative operating cash flow for Ircon. I won't take this as a negative, but ठीक है, RVNL is sitting at a pretty good cash flows here. Ircon is fine, minus 78 crores. You might probably want to give 1 point more to RVNL at this point of time. But again, 78 crores is not very, significant for you to move from Ircon to RVNL at this point. Then if we look at the EPS growth, EPS from 3.61 a share, it has gone to nearly about 7.5. RVNL EPS growth has been phenomenal. But again, if you look at Ircon,
EPS is almost double from 5 per share in 2020 to almost 10 in March 2024. So if you look at the last 5 years trend, both the companies have done absolutely well. I mean, you look at the revenue figures, you look at the profit figures, you look at the EPS growth. I think both, I mean, both the, the data points are moving in tandem. ऐसा नहीं कि एक अलग direction में जा रहा है और दूसरा कोई अलग direction में जा रहा है. I'll tell you where the change is in valuation wise. आपको ये change दिखेगा. I'll come to that part. Now, if you look at the operating margin, जो sales minus cost, जो ऊपर जो margin है, I'm not talking about the net profit margin. जो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन है विच इज गॉन फ्रॉम ऑलमोस्ट 6% to 12% ईयर एंड स्टेडीली इफ यू सी इट हैज ग्रोन एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में इरकॉन हैज बीन फेसिंग सम प्रेशर ईयर बिकॉज अगर आप ग्रोथ देखोगे लास्ट 5 ईयर से एकदम फ्लैट है एज कंपेयर टू आरवीएनएल. So almost 12%, 10, 9, 9, and 11. Now, if you compare that with RVNL, RVNL has seen a good operating margin percentage trend. But Ircon का trend थोड़ा सा flat है. Uh, but again, if you look at net profit percentage, net profit margin for RVNL, it is steady from almost 5%, 5. It's near about 5 to 7% range for the last 5 years. Ircon is somewhere, I mean, pretty similar to their operating margin. I think these figures need to you grow. Agar you can't be steady or so 8%, 7, 7, 7, and 7. So last 4 years, the profit percentage hasn't moved much. Whereas RVNL from 5 it has gone to near about 7. So these figures, probably need some improvement. But again, अगर हम लोग net profit margin तक ही देखें तो I'm sure I think RVNL is probably looks fundamentally better as compared to Ircon. But again, nothing wrong with Ircon also at this point of time. Both the companies have debt in their books, or debt to equity again lower the better. So, but one good thing is RVNL's debt to equity trend has been decreasing, which is a positive sign. So from 0.83 it had gone to 1, 0.87 and 0.68. Whereas Ircon, if you see, it had almost gone to 0.07 in March 21. Slightly it has increased because these companies, they have a lot of short-term borrowings as well. I think it's a capital intensive business, and usually I prefer to invest in companies that carries no debt in their books. I mean, that is my personal preference, but obviously there are some companies which are capital intensive and can't function without a debt. तो जो कंपनीज में डेट है, यू ऑल्सो हैव टू एंश्योर दैट देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर जस्टिफाइड फॉर द डेट दे कैरी इन देयर बुक्स. But again, nothing to worry on the debt to equity front. Both companies are doing well. Then if you look at the interest coverage ratio, मतलब कितना पैसा है. So if you look at the profit and loss statement, sales minus cost, then it's your EBITDA. EBITDA से depreciation, amortization निकल जाएगा, तो you have your EBIT, which is your earnings before interest and taxes. Then you remove interest from that. वो interest देने के लिए you need to have earnings before interest and tax, right? तो वो कितना times है? That is what your interest coverage ratio is. Then EBIT से interest निकल जाएगा, you will have EBT, which is your earnings before tax. Then you pay tax from that. फिर आपका बचेगा PAT, which is your profit after tax. Then आपका जो preference shareholders है उनको dividend जाएगा, you remove preference dividend from PAT, so you'll have profit available to equity shareholders. Then from that profit you give equity dividend. जो बाकी बचता है, that is your reserves and surplus, which goes to your balance sheet under shareholders fund. Then if you add reserves and surplus and equity share capital, that is your total shareholders fund here. So that is how your profit and loss statement looks like. I think both the companies, they have that enough, so almost 4 times the money they have to for their interest coverage ratio is pretty good. So almost 4.47 for RVNL, 4.47 times uh, the so utna unka, that is the amount of money that these guys have. Ircon again 24 say the trend is decreasing, but again they don't, even if the repayments are on time and they have enough money to cover their interest obligations as well. So again, nothing to worry on that front. If you look at long-term borrowings, I'll come to that part, Jai ji. If you look at the long-term borrowings, मतलब जो borrowings है for more than a year or so, nothing significant. 4,000 crores, 6,000, 5,000 crores is what RVNL has, and near about 2,000 crores is what Ircon has. But I think these guys, the revenues that they have and the profits that they have, I think it's
Nothing to worry on that front. It's not that they are loss making companies, both are profit making companies, and they have enough reserves, as well as their revenue growth and profit growth is justified for the amount of borrowings that they have. ठीक है. Now comes the most important part जो मुझे डिस्कस कर रहा है यहाँ पे. या श्योर मुकेश जी, नोटेड. नाउ अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स देखोगे यहाँ पे, जो सेक्टर पी है दोनों, ये रेल इंफ्रा स्टॉक्स के, इट इज नियर अबाउट 24.2. नाउ व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग्स? प्राइस जो इन्वेस्टर पे करता है फॉर एवरी 1 rupee प्रॉफिट दैट द कंपनी मेक्स. Now, sector P is almost 24.2 is the price that people are paying for 1 rupee profit that these rail companies make. But अगर आप RVNL का stock P देखोगे, it's at 83.6, whereas IRCON का आप देखोगे it's 31. Now, I would want to point a question to you guys. Now, if we are just, अगर हम लोग सिर्फ प्राइस टू अर्निंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये दो कंपनी में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन सा कंपनी लग रहा है आपको? क्या आपको आरवीएनएल एक्सपेंसिव लग रहा है या क्या आपको इरकॉन एक्सपेंसिव लग रहा है? This is what I had mentioned in the beginning as well. Value, both the companies are fine, but valuation wise अगर आप देखोगे at this point of time, मतलब वही आईफोन अगर मार्केट में आपको 1 लाख का मिल रहा है, imagine if somebody is selling an iPhone for almost 1,80,000, will you still go ahead and purchase it at that price? Obviously there can be takers, ऐसा नहीं कि आपका प्राइस टू अर्निंग्स कम होना चाहिए सेक्टर पी से, बट कैन यू सी विच इज द एक्सपेंसिव आउट ऑफ द टू ईयर? क्या आपको आरवीएनएल एक्सपेंसिव लग रहा है या आपको इरकॉन एक्सपेंसिव लग रहा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट करके बताना. दोनों का सेक्टर पी 24.2, बट आरवीएनएल का पी इज एट 83.6. दैट्स वेरी एक्सपेंसिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता या एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी होता, आई वुडेंट बी बाइंग आरवीएनएल एट दिस प्राइस. मतलब इट्स गुड, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आरवीएनएल एक खराब कंपनी है, उसका फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है, बट ऐसे वैल्यूएशन में से, क्रेजी वैल्यूएशंस में इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना, आई थिंक यू शुड प्रोबेबली अवॉइड इट. अगर आपने पहले से अगर आरवीएनएल खरीदा हुआ है तो इट्स फाइन, आई थिंक यू वुड बी सिटिंग एट गुड प्रॉफिट्स. बट अगर आप इरकॉन का अगर प्राइस टू अर्निंग्स देखोगे, इरकॉन का प्राइस टू अर्निंग्स इज 31.7, विच इज स्लाइटली अबव, आप बोल सकते हैं एक फेयर वैल्यूएशन में है. सो इरकॉन लुक्स चीप. आई वोंट से ओवर वैल्यूड, बिकॉज आप सिर्फ पी रेशियो देख के बोल नहीं सकते हो कि ओवर वैल्यूड होगा या अंडर वैल्यूड होगा. अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखोगे, बुक वैल्यू इज नथिंग बट योर share capital plus your reserves and surplus. Price to earnings is your, the price that an investor pays for every 1 rupee earning that the company makes. इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाता हूँ आपको, ये प्राइस टू अर्निंग्स क्या है मुकेश जी, आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. तो वैल्यूएशन वाइज अगेन प्राइस टू अर्निंग्स आरवीएनएल का काफी ज्यादा है. सो इस टाइम पे मैं ये भाव पे खरीदना शायद उचित नहीं समझूंगा. अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखोगे, फॉर एवरी 1 rupee वैल्यू व्हाट इज द प्राइस पीपल आर पेइंग, ऑलमोस्ट 15.6 है बुक वैल्यू आरवीएनएल का, और इरकॉन का बुक वैल्यू इज 5. दोनों का प्राइस टू बुक वैल्यू इज नियर अबाउट एक्सपेंसिव है, बट अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशन करें दोनों स्टॉक्स का, you will find that Ircon is probably much more cheaper than RVN at this point. अगर आप पेग रेशो भी देखें, विच इज प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से आप सिर्फ प्राइस टू अर्निंग्स नहीं देख सकते, आपको ग्रोथ भी एडजस्ट करना पड़ेगा. नाउ विच ग्रोथ एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट ग्रोथ. अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स को नीचे ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर दे तो जो आएगा अपने को वो आएगा आपका पेग रेशियो. अगर मैं ग्रोथ को भी एडजस्ट कर दूं प्राइस टू अर्निंग्स पे, आरवीएनएल इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. सो आरवीएनएल का पेग इज नियर अबाउट 4.26, whereas इरकॉन का पेग इज 1.97. तो हमने तीन की वैल्यूएशन रेशियोज देखे यहाँ पे. वन इज योर प्राइस टू अर्निंग्स, वन इज योर प्राइस टू बुक, एंड वन इज योर प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ, विच इज योर पेग. बस ये तीन वैल्यूएशन रेशियोज देके आपको क्या लगता है कौन सा स्टॉक चीप है और कौन सा स्टॉक एक्सपेंसिव है? बस आप मुझे ये कमेंट करके बताना चैट बॉक्स पर. हाँ, सी वी आर, एक तो आपको रिलेटिव वैल्यूएशन करके देखना पड़ेगा. यू कांट जस्ट टेक इरकॉन एंड देन से वो एक्सपेंसिव है कि नहीं. अगर आप सिर्फ इरकॉन के एनालिसिस करोगे तो शायद आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीप है या एक्सपेंसिव है. बट आरवीएनएल डेफिनेटली, अगर आप देखोगे
प्राइस टू बुक वैल्यू इज नियर अबाउट 15, दैट्स टू मच. एंड अगर आप पेग भी देखोगे आरबीएनएल का, विच इज नियर अबाउट 4, काफी ज्यादा होता है. यूजली पेग हम लोग अराउंड 1 के आसपास प्रेफर करते हैं, 1 के नीचे तो काफी अंडर वैल्यूड है. बट इरकॉन लुक्स cheap, right? I think Prem Chaudhary ji is saying Ircon. हमने दोनों का अभी तक एनालिसिस कर लिया है. आई थिंक प्रेम चौधरी जी सेइंग इरकॉन. व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? किसको लग रहा है कौन सा स्टॉक चीप है यहाँ पे? इज इट इरकॉन? सी, हमको यहाँ पे recommendations की बात नहीं कर रहे. आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू व्हाट द डेटा इज शोइंग एट दिस पॉइंट. आरवीएनएल काफी महंगा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट डजेंट मेक सेंस टू एंटर इनटू आरवीएनएल. काफी ओवर वैल्यूड है. हाँ, मार्केट में अगर कोई करेक्शन आता है, फंडामेंटल्स तो एक आध दो दिन में चेंज नहीं होगा. सी, मार्केट्स आर आल्सो एट द ऑल टाइम हाइस. एक हेल्दी करेक्शन इज रिक्वायर्ड. तो कभी ना कभी तो मार्केट्स विल करेक्ट, एंड वो करेक्शन के टाइम इज द टाइम व्हेन यू नीड टू प्रोबेबली एंटर इनटू गुड क्वालिटी स्टॉक्स. तो क्वालिटी कैसे पता चलेगा? दिस इज लाइक वन ऑफ द वेज कि आपको स्टॉक का फंडामेंटली साउंड है और क्वालिटी वाइज कौन सा स्टॉक बेटर है. वो टाइम पे आपको ये हेल्प करेगा. बट आई एम नॉट सेइंग कि आरबीएनएल खराब है. सी, एक्सपेंसिव डजंट मीन इट इज बैड. इट इज जस्ट दैट इतना भाव है इसका चल रहा है अभी, ये प्राइस पे मुझे नहीं खरीदना है आरबीएनएल. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इरकॉन स्लाइटली थोड़ा फेयरली वैल्यूड आप बोल सकते हैं. इट्स एट अ चीपर रेट, बट अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है और ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ है विच इज थोड़ा फ्लैट. अगर बजट में कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आता है, एंड कंसिडरिंग द प्लान्स दैट द करंट गवर्नमेंट हैज रेलवेज को लेके, हो सकता है. सी, दीज टू कंपनीज माइट डू वेल. वी डोंट नो. आरबीएनएल भी अच्छा कर सकता है, इरकॉन भी अच्छा कर सकता है. बट ऐसा होता है ना कि कुछ सेल लगता है तभी हम वो अच्छे चीज जो होता है हम लोग वो सेल के टाइम में खरीदते हैं, बिकॉज थोड़ा सस्ता मिलता है. सो इट्स द सेम ईयर. आरबीएनएल अभी थोड़ा महंगा है, सो इट्स बेटर अवॉइड एनी फ्रेश बाइज इन दिस स्टॉक. बट आप इसको ट्रैक कर सकते हो, और जब भी आपको एक अच्छा वैल्यूएशन मिले उस टाइम पे प्रोबेबली थोड़ा और एनालिसिस करके यू कैन एंटर इनटू. डिविडेंड वाइज बोथ द कंपनीज गिव डिविडेंड. आरबीएनएल भी आपको अच्छा डिविडेंड देता है और इरकॉन भी आपको अच्छा डिविडेंड देता है. अगर आप नेटवर्थ देखें, नेटवर्थ इज नथिंग बट योर शेयर कैपिटल प्लस योर रिजर्व्स एंड सरप्लस. दोनों का अच्छा नेटवर्थ है. आरबीएनएल हैज नेटवर्थ ऑफ अराउंड 8,000 crores. इरकॉन हैज नेटवर्थ ऑफ अराउंड 5,871 crores. सो नेटवर्थ इज जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस बचता है उसको आप इक्विटी शेयर कैपिटल से आप ऐड कर दोगे. सो दैट इज योर टोटल शेयर होल्डर्स फंड. और ये दोनों मिला के ही आपका जो बुक वैल्यू है, तो प्राइस बाय बुक वैल्यू है. जो टोटल बुक वैल्यू को डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिलेगा. उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे प्राइस से तो आपको प्राइस बाय बुक वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे. इफ यू ऑलरेडी हैव जय जी, इफ यू अगर जिनके पास ऑलरेडी आरबीएनएल है, जस्ट sit tight with that. You don't have to do anything, but avoid any fresh buys at this point. That is what I'm saying here. प्रमोटर होल्डिंग काफी दोनों में ज्यादा है, अराउंड 78% एंड 73%. वन गुड थिंग इज इसका प्लेज परसेंटेज जीरो है, सो नथिंग टू वरी ऑन दिस फ्रंट. बट हाँ, ये हाई प्रमोटर होल्डिंग्स है. थोड़ा सा ठीक है, इट्स फाइन. आई मीन नथिंग टू वरी ऑन दैट प्रमोटर होल्डिंग फ्रंट, बिकॉज जितना 75% से नीचे, समवेयर अराउंड 60-70% के आसपास अगर प्रमोटर होल्डिंग होता है, विच इज गुड योर. या एंड अगर हम देखते हैं कि एफ का क्या ट्रेंड है, आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका कितना स्टेक है इस कंपनी पर. अगर आप देख रहे हो आरवीएनएल में उन्होंने लगातार अपना स्टेक बढ़ाया, ऑलमोस्ट फ्रॉम 1.5% से 1.752% से ऑलमोस्ट 2.32 नाउ. अगर आप इरकॉन में भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 4% था, फिर 5% हुआ, थोड़ा सा उन्होंने अपना स्टेक कम किया यहाँ पे, और यहाँ पे 4.58. अगर आप देखो कि एफ आई ना दोनों स्टॉक में लगातार अपना स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि काफी ज्यादा अमाउंट से अपना स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं, बट दे हैव देयर आइज ऑन बोथ दी स्टॉक्स, आरबीएनएल एंड इरकॉन एज वेल. अगर आप आरबीएनएल का 52 वीक लो देखोगे 119 है. अभी इसका प्राइस 585 चल रहा है, और इसका जो 52 वीक हाई था वो 647 है. मतलब इट्स स्टिल 10% डिस्काउंट पे चल रहा है उसका 52 वीक हाई से. So chances are that there is more, there is more headroom for this stock to go up higher.
अब इरकॉन का देखो 52 वीक लो इज 81, राइट नाउ इट इज 313, और इसका 52 वीक हाई हाल ही में हुआ था. इट इज नियर अबाउट 11% डिस्काउंट टू इट्स 52 वीक हाई. और अगर आप बीटा देखोगे कि हाउ मच वॉलेटाइल इज दी स्टॉक्स कंपेयर टू द मार्केट, सो इरकॉन थोड़ा स्लाइटली वॉलेटाइल है बिकॉज बीटा इज 2. सो एवरी फॉर 1% मूवमेंट आपका ये जो प्राइस ऑलमोस्ट 2% ऊपर या नीचे जाएगा. वेर एज आरवीएनएल इज स्लाइटली, उसका बीटा अगर आप देखोगे तो बीटा थोड़ा कम है एज कंपेयर टू इरकॉन. तो ये था आपका पूरा रेशियो एनालिसिस. नाउ इफ आई हैव टू आस्क यू वन क्वेश्चन बिटवीन आरवीएनएल एंड इरकॉन, आपका क्या व्यूज है? आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्या, ओके आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. Is RVNL a good buy at this point of time? You can just give me a heads up in the, sorry, you can just comment in the chat box. राजू जी बोल रहे एयरकॉन एक ही सी, दोनों फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है एंड आई एम प्रेटी श्योर कि बजट में रेलवे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आने ही वाले. द केपेक्स इज गोइंग टू इंक्रीज, सो देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि कोई अनाउंसमेंट आएगा ही नहीं रेलवेज के लिए. हमने खुद देखा है कि लास्ट 5-7 सालों में रेलवेज कितना इम्प्रूव हुआ है और कितना इम्प्रूव और हो सकता है. Yes, there have been a lot of safety concerns है. I am pretty sure the government will also try to address it, in the upcoming budget as well. तो ऐसे ही आप जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो मेक श्योर करना आप एटलीस्ट ये बेसिक चेक्स तो करें. आई एम नॉट सेइंग कि आपको बस इतना ही चीज देखना है इन्वेस्टिंग के लिए. बट आप बहुत लोग ऐसे हैं जो ठीक है, उन्होंने किधर आपने देख लिया होगा कि आरबीएनएल खरीदो, अच्छा है ये स्टॉक बढ़ेगा. डोंट गो विथ emotions when it comes to investing. At least make sure that you do some basic checks before you invest in stocks. आरवीएनएल क्या खरीद सकते हैं? गुड स्टॉक, यस, अच्छा स्टॉक है, बट क्या ये प्राइस देना बनता है? पर्सनली फॉर मी नो, काफी महंगा है. क्या करेक्शन होने के बाद हम एंटर कर सकते हैं? प्रोबेबली यस, बिकॉज आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दी स्टॉक्स फंडामेंटली. कौन सा सबसे ज्यादा फेयरली वैल्यूड लग रहा है? आई थिंक समबडी आस्क्ड मी कि कौन सा फेयरली वैल्यूड है एट दिस पॉइंट. आई वुड से इरकॉन. इरकॉन इज एट अ वेरी गुड लेवल टू एंटर प्रोबेबली बिकॉज वो फेयरली वैल्यूड है. बट इसका मार्केट कैप इज ऑलमोस्ट, आरवीएल का मार्केट कैप इज 4x हायर. तो हो सकता है मे बी इरकॉन माइट ऑल्सो ग्रो. टाइम लगेगा, बट इरकॉन में देर आर सर्टेन थिंग्स. नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ थोड़ा सा स्टेडी, आई थिंक दैट नीड्स टू पिकअप. And probably once they become operating cash flows positive, and once they start getting a lot of order flows, probably you will see these companies doing well. Exactly, both are good. That's a very good point. Share investing talks has mentioned both are good, but currently RVNL में invest करना जैसा नहीं बनता है. Ircon is good. Ircon is a cheaper option at this point of time. So what we can also do is, let us also look at the charts. मैं आपको charts दिखाता हूँ दोनों का. अगर हम आरवीएनएल की चार्ट्स देखें यहाँ पे, लेट मी जस्ट ओपन अप द चार्ट्स हियर. ये तो हमने अभी रेशियो एनालिसिस कर लिया, हमने वैल्यूएशन देख लिया, फंडामेंटली साउंड है कि नहीं वो देख लिया. नाउ लुक एट दिस ग्राफ ऑफ आरवीएनएल गाइस. एकदम वन डायरेक्शन मूव है. चार्ट देके आपको पता चल रहा है काफी ऊपर चला गया है. आई थिंक इट डजंट मेक सेंस टू एंटर एट दिस पॉइंट. ऑलमोस्ट एट 586 पर है. आपके अच्छे लेवल्स यहाँ पे थे जब यहाँ पे अराउंड ब्रेकआउट हुआ था लास्ट ईयर सितंबर में. रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स आप देखोगे तब से एक अच्छा अपमूव पिकअप हुआ था. ठीक है, कभी ना कभी तो करेक्शन आएगा ही. वी डोंट नो व्हेन दैट इज गोइंग टू हैपन, बट डेफिनेटली करेक्शन विल हैपन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बट आपको एक अच्छा भाव मिलता है वैल्यूएशन वाइज. अगर आपको ये स्टॉक ठीक लगता है, probably that might be a good time to enter. But definitely at this point of time, अगर आपके पास आरवीएनएल ऑलरेडी है तो गुड. अगर आप चाह रहे हो कि आपको रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आरवीएल से फिलहाल के लिए अभी दूर रहना. इरकॉन इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट, बट ऑल्सो एंश्योर कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज भी इनके जो फिगर्स है वो देखें कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बिकॉज दैट विल गिव अ क्यू कि आने वाला साल कैसे हो सकता है. सो यू ऑल्सो हैव टू लुक एट दैट. आरवीएनएल आप क्लियरली देख रहे हो तो ये काफी बढ़ चुका है. बट अगर मैं इरकॉन की बात करूँ यहाँ पे, इरकॉन टेक्निकली इज ऑल्सो लुकिंग गुड. ये अच्छा ब्रेकआउट लेवल पर भी है, मैं आपको बताता हूँ. ये देखो, ये इरकॉन का चार्ट है.
सो यू कैन सी दैट नियर अबाउट 280 लेवल्स जो था इरकॉन का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था इसका, ये यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया था, यहाँ पे 21 मई को नहीं हुआ। फिर से 3 जून को वो लेवल तोड़ने की कोशिश किया था, 280 का जो लेवल था, फिर से नहीं हुआ। ये वो 4 जून वाला था जहाँ पे वो इलेक्शन आउटकम ने पूरा बाजी को उल्टा कर दिया था यहाँ पे, बट आई थिंक मार्केट्स रिकवर्ड फ्रॉम दैट। अगेन आप देखोगे जुलाई के मंथ में इरकॉन हैज गिवन अ ब्रेकआउट, वो जो 280 लेवल्स को 3 बार यहाँ पे नाकामयाब रहा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है हमें इरकॉन में। एंड लास्ट 3 दिन से अगेन रेलवे स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में है, बट आई एम श्योर आपको दोनों स्टॉक में एक स्पाइक दिखने को मिलेगा। सो थोड़ा अपना इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल पे रख के डोंट enter into RVNL at least at this point of time. But Ircon is something that you can look at, but I would say wait until the budget अगले ट्यूसडे को है। एक बार अनाउंसमेंट देख लेंगे कि एग्जैक्टली वेदर इट इज पॉजिटिव फॉर रेलवेज और नेगेटिव फॉर रेलवेज। बट नाउ दैट यू नो कि आरवीएनएल का वैल्यूएशंस आर ऑन द एक्सपेंसिव साइड, whereas Ircon is probably at a much cheaper valuation. हो सकता है कि it might retest around 280 and then it might give a bounce here. So so this was probably the रेलवे सेक्टर एनालिसिस। मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे दो स्टॉक्स ही लिए, विच इज आरवीएनएल एंड इरकॉन। वो मेरा फेयर नहीं होता कि मैं आईआरएफसी या आईआरडीए भी लूँ, बिकॉज उनके बिजनेसेस थोड़े अलग है कंपेयर टू दिस। आई वांटेड टू फोकस ओनली ऑन रेल इंफ्रा स्टॉक्स। बट अभी आपको थोड़ा जिस्ट मिल गया हो, आई होप आपको एक जिस्ट मिल गया हो। अगर आपके पास कोई स्टॉक्स है, आप कोई एनालाइज करना चाहते हो, आप उन्हीं स्टॉक्स को ऐसे एक्सेल में लिस्ट डाउन करके आप इसी पैरामीटर्स पे आप देख सकते हो कि किसी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, किसका वैल्यूएशन कम है। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे सेशंस आगे भी करें, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप कौन सा सेक्टर की एनालिसिस आप चाहते हो और कौन सा स्टॉक्स आप चाहते हो कि मैं ऐसे एनालाइज करूं, ताकि आपको भी काफ़ी हेल्प रहेगा, आपको भी पता चलेगा, आप जो शायद जो मिस्टेक्स हो रहा है आपसे इन्वेस्टिंग से, शायद आप वो अवॉइड करें। तो आपका कोई अगर कोई प्रेफरेंस है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना कि विच सेक्टर डू यू वांट मी टू एनालाइज, and you probably we can have this live series in the future as well. हम महीने में एक दो बार मिल सकते हैं and we can do these analysis of different sectors and stocks. But keenly keep tracking the budget, because budget is one event where जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक क्यूज मिलेंगे। वहाँ से आप एक जो सेक्टर्स है वो लिस्ट डाउन कर सकते हो, यू कैन लिस्ट डाउन योर स्टॉक्स, and that can be a good starting point to start building your portfolio if you have not. तो आई होप आपको ये आज का सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो ये था आपका रेलवे का एनालिसिस। ऐसे ही सिमिलर वे में कल हम मिलेंगे, कल सेम 4 बजे को हम जो है फार्मा सेक्टर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सेम वे में हम लोग देखेंगे फार्मा में क्या अनाउंसमेंट्स है, फार्मा के 3 स्टॉक्स देखेंगे, और उसके भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके एंड देन विल फिगर आउट कि विच फार्मा स्टॉक लुक्स गुड। तो आपको काफ़ी सारे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे ये लाइव सेशन से। सो आई होप इट वाज अ गुड सेशन। डू लेट मी नो क्या फीडबैक है आपका, ताकि मुझे भी पता चले आपको कैसा लगा आज का सेशन। आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सो ये था मेरा आज का सेशन। आई होप इट वाज गुड सेशन गाइस। थैंक यू सो मच रोहित जी। सो आप फार्मा सेक्टर का यहाँ पे I can see yes, 80% of you guys are monitoring the pharma stocks, pharma sector per se, and I think 20% are saying no. तो इसी वे में हम कल मिलेंगे 4 बजे और हम फार्मा सेक्टर के एनालिसिस करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप कल भी आए
और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनको भी इस लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए आमंत्रण देना. So that's all from my end. Bye guys, take care and see you tomorrow at 4 o'clock जहाँ पे हम फार्मा सेक्टर की एनालिसिस करेंगे. So bye guys, take care and see you soon. Take care guys, bye.